I don't want to see any crowd there. इधर आओ, इधर आओ। उसको तो लिंक दिया उन्हें यार। निकाल के दे दी, मेरे को पता भी नहीं गिर गया। पुलिस वाला है। तो और कोई है क्या? और आ रहा है ना। गेट नंबर 3 से पेरेंट्स लोग आएंगे। गेट नंबर 2 में है क्या? कैप लगा, कैमरा चालू है उनका, कैप लगा दो। गेट नंबर 3 से सारे पेरेंट्स आएंगे। हो गया, चालू हो गया। अच्छा, कैप लगा दिए भैया। गेस्ट और आ रहे हैं। हाँ, गेस्ट और आ रहे हैं ना। बात करेंगे आप लोग, सही बात है। किसी भी कंडीशन में भी कुर्सियों को मत अपने कैमरे पे लेना, लाइव कर दिया है ना। इसको ले लो और ऐसा करते हुए स्टेज में चले जाओ। अब आप लाइव में हो ना, हमने कर दिया। सर अब कोई नहीं आएगा, सारे गेस्ट आ गए।
से हट जाएगी, इधर मत बोलिए। ऑडियो आ गया आपको? आ गया, आ गया, सब दिखेगा। ऐसा नहीं क्या चिल्ला रहा है आवाज ध्यान दिया गार्ड्स पेरेंट्स को सेटल डाउन कराओ, बैठाओ जल्दी जल्दी। सरस्वती मंदिर अभी तो ऊपर है ना, जब आएंगे तो चालू कर लेंगे। नहीं तो वो आपको सब नहीं होना चाहिए, चालू गेस्ट निकलना। यस सुनो मैं दूर लाता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग कर लो दोबारा फिर आधा पेमेंट मिलेगा पूरा तो कितना 10,000 वाली सीख रहा हूँ, ऑफिस सीख रहा हूँ, मैनेजमेंट जब तक डाटा नहीं दिखेगी तो पैसा नहीं ऑफिस सीख रहा हूँ मैं, आपको पटा लूँगा पूरा, भैया सिखाएगा यही जाने में रिकॉर्डिंग बटन दबाना नहीं सिखाएगा। थॉमस सेंटर मैं दोनों वाला सिखा दिया, मगर रिकॉर्डिंग बटन कहाँ दबाना ये नहीं बता दूँगा, आपको पता दूँगा एकदम फर्स्ट क्लास है। कल ही फ्री वो नया वर्जन क्या है? नया वर्जन है, फ्री लिया हूँ मैं, एम प्रो का प्लान था मगर नहीं लिया नहीं है, इसलिए मैं एम फ्री लिया। उसका रिजल्ट देखा ना, अभी उसका रिजल्ट भी देखा, रिजल्ट में मजा नहीं आया, रिजल्ट फ्री लिया। गर्म हो रहा है। नहीं वो गर्म तो एम फ्री होता है, मगर कुछ कुछ फंक्शन है तो आप इंटरेस्ट नहीं है, शांति का टिकट नहीं तो आप अंदर लेके आ रहे हैं, कंटिन्यू चलाएं ताकि कारण जैसा खड़े ना सबको बताऊँ होता है गर्म। सोनी का कोई भी कैमरा यूज़ करो गर्म।
All the parents are requested to settle down. Our guests have arrived. They will be arriving soon to the stage to start our program. All the prize winners and the parents, if they are present, they should assemble near the dais for the prize.
Check. All our respected dignitaries are being escorted by our principal sir, school and church managing committee members, students council members to the dais. I request you all to stand to welcome our guests. Our dignitaries for the celebration of our 56th annual day, Abhivekti 2022 is coming to the dais. On behalf of the MGM family, we welcome all our dignitaries to the dais. All are requested to kindly occupy your seats. His Grace Alexios Mar Eusebius, Manager Bishop and Metropolitan of the Calcutta Diocese, Honorable Chief Guest Dr. Abhishek Pallava, Superintendent of Police, Durg District, Special Guest Sri S.V. Nandanwar, Chief General Manager Town Services and CSR, Special Guest Madam Vibha Jha, Coordinator, City Coordinator CBSE, Reverend Father Jacob Thomas, Vice President of the school, Reverend Father Shinu Cherian, Assistant Vicar, Honorable Correspondent of the school, Sri K.C. Matthew, MGO Cathedral Secretary, Sri Roy George, MGO Cathedral Treasurer, Sri Disney Varghese, school and church managing committee members, Reverend Fathers, special invitees, respected Principal Sir, Professor Dr. B.D. Tharagan, Headmistress Madam Elizabeth Anita Rajan, and Madam Bina Matthew, in charges, Mrs. Shiny S. Joseph and Mrs. S. Gina, press and media, teaching and non-teaching staff, and all the participants and prize winners, good evening to all. It's a pleasure to welcome you all here today for our 56th annual day celebration, Abhivekti 2022, based on the theme, Every Child is Special, Let's Empower Him, Her. Encouraging children with words, recognizing their efforts are the areas where we can help them. It's mark of tradition to invoke the blessings of Almighty in the beginning.
Faith and prayer both are invisible, but they make impossible things possible. I request you all to stand for the school prayer by our school choir. Thank you. Please be seated. Light the lamp of love in your heart, the lamp of abundance in your home, the lamp of compassion to serve others, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, and the lamp of gratitude for the abundance that the divine has blessed us with. To make today's program a blessed one and for seeking the choicest blessing, I request our respected principal, sir, to accompany our dignitaries to kindle the lamp. Please, sir. Hello. Start करो ना, मनीष. हस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय A good day evening. To make this evening a good one, I now request Mrs. Elizabeth Anita Rajan to welcome the gathering. Please, ma'am. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. Good evening to one and all. I am extremely honored to welcome you all in this prestigious moment when our school celebrates its 56th annual day, Abhivakti 2022. As the theme says, every child is special. Let us empower him. We in MGM empower the students
to excel in different areas of life by imbibing various life skills through specially designed activities, which is the need of 21st century education. The duty which is assigned upon me is to welcome everyone to today's function. Today's function will be presided by most respected His Grace Alexios Mar Eusebius, Metropolitan of Calcutta Diocese and Manager Bishop of our school. His Grace, formerly Reverend Father Alex Daniel, is a great scholar, author and a columnist in mission literatures. From November 2022 onwards, His Grace is serving as the Metropolitan of Calcutta Diocese of Indian Orthodox Church. I welcome Tirumeni to today's function. We feel honored to have Sri Abhishek Pallava, SP of Durg District, as our chief guest for today's function. On behalf of our school, I thank him for providing his gracious presence to enhance our joy. I welcome you, sir. Special guest of today's function is Sri Nandanwar, Chief General Manager, Town Services and CSR. With immense pleasure, I welcome Sri S.V. Nandanwar to today's function. We also have Mrs. Vibha Jha as our special guest today. Madam is a city coordinator of CBSE, Durg District and principal of KH Memorial School. With great pleasure, I welcome Vice President of our school, Father Jacob Thomas, has been our inspirational force in the coordination of all activities. I welcome you, Father. I cordially welcome Father Shinu Cherian, Assistant Vicar of MGO Cathedral, to today's function. Our Honorable Correspondent, Mr. K.C. Matthew, is the guiding force for all our activities and motive. With great pleasure, I welcome you, sir. I wholeheartedly welcome Honorable Treasurer of our school, Mr. Roshan B. Kochi, and Honorable Committee members, Mr. P.V. Shajan, Mr. Jacob Matthew, Mr. Jacob George, Mr. T.P. Matthew, Mr. K.P. Thomas, Mr. Bijoy Ipe, Mr. T.T. Matthew, and Mr. Anil David to today's function. I extend my warm welcome to Honorable Treasurer, Mr. Disney Varghese, Honorable Secretary, Mr. Roy George, and all respected committee members of MGO Cathedral. Our principal, Dr. B.D. Tharagan, is a man of distinct vision and designer of innovative ideas, whose achievements have already been acknowledged in the academic sector. We welcome you, sir. I extend hearty welcome to Headmistress, Mrs. Beena Matthew, in charges Mrs. Shiny Joseph, Mrs. S. Gina, all the respected teachers, non-teaching staff members, and all the supporting staffs to this function. With great pleasure, I welcome all the distinguished guests, police officials, members of PTA, alumni of the school, press and media, dear parents and students to this function. Today, as we showcase the activities, achievements, and talents of our young mind, we pray to God Almighty for countless blessings and remember our patron saint, Mar Gregorios of Permela, and our late lamented Bishop Stephanos Mar Theodosius. I sincerely wish everyone a wonderful evening. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I am your host for today, Megha Reddy, the head girl of this very prestigious institution. Well, education is not only the encompassment of knowledge, but also the formation of character. Today, on Abhivyakti 2022, we emphasize on each and every student, helping them to realize their own potential. Because
हर बच्चा जीनियस होता है. Every child is special in their own sphere. Why turn them into something just to satisfy our social standards? Well, as the saying goes, every child is special. Don't turn them into something to be just your puppets. Every child needs some care. Every child needs that touch that our institution gives it to them. Well, to continue our today's event, I would like to ask the next competitors to come to the stage. It's an honor itself to host this beautiful and charming audience today. Myself, Ayan Khan, along with my co-host Snigdha Das. Once again, we welcome you all in today's annual function. Ayan, don't you think so? The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of music, dance, light and joy. So, are you all ready for the performance? Yes, we all are. So without any further ado, let's start the program. We dance for laughter. We dance for tear. We dance for madness. We dance for fear. We dance for hopes. We dance for scream. We are the dancer. We create dreams. Dance is the most beautiful form of human expression. It is the most beautiful form of human expression that human can express. So, let's put your hand together for a splendid semi-classical dance performance.
Sometimes I wonder if Wonderland is true. I remember those days where dreams would have come true. I remember those days where dreams are all we had. But now it's just a forgotten path. To awaken the child who resides deep inside of you, here comes our KG group to help you remember about your childhood and dreams. तो चलिए आज इन बच्चों के साथ हम भी अपना बचपन जीते हैं. Hello. Go. Hello. हर एक बच्चा स्पेशल है, देखो हर एक बच्चा स्पेशल होता है, हर एक बच्चा स्पेशल होता है. ओ भव्यांशा, यू आर हियर. अरे तक्ष, तुम भी यहाँ और ऑडियंस भी. कम ऑन, लेट्स मीट देम. खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है. जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है. मैं भी भव्यांशा राव आप सभी का आदर अभिनंदन करती हूँ. We are fortunate enough to cordially welcome the sky of glittering stars. That is our most valued parents of genius children. I Taksh Kanodia, I am genius. क्यों? मैं भी तो genius हूँ ना तक्ष. In fact भव्यांशा, every child is genius. हाँ तक्ष, तभी तो कुछ गाने में genius है, कुछ डांस में genius है और कुछ तो कलरिंग एंड पेंटिंग में genius है. That's true, my friend. See, genius APJ Abdul Kalam sir. He is the missile man of India. हाँ, और genius Sarojini Naidu, Nightingale of India. Suhani Shah, a very famous young magician who haven't ever been to school. हाँ, और MS धोनी, जिनको तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर वो एक लाजवाब क्रिकेटर है. Really, one can hardly excel everything. जी, ये बात तो हमें मानना ही पड़ेगा कि मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता. I agree, Bhavyansha. Our school is another example of a garden with variety of flowers. The talent of our little genius participants will justify the same tonight. राग बजेगा, रंग बजेगा, प्यार का अंग बजेगा. राग बजेगा, रंग बजेगा, प्यार का अंग बजेगा. जब आप सभी की तालियां गूंजेगी, तो नन्हे टैलेंट का जलता रंग सजेगा. So give a big hand for our genius performers. Thank you everyone. Thank you everyone. तो चलो तक्ष, हम स्टेज देते हैं हमारे टैलेंटेड परफॉर्मर्स को और हम चलते हैं इनके परफॉर्मेंस का मजा लेने.
the clouds above and search for a rainbow. I see a kite fly by and I say hi. Hello, kite! Come on and spread your wings so we can take flight. Then I fly, fly, fly like a kite. I feel strong, strong, strong as a tiger and as big, big, big as a giraffe. So high, 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 and I jump, jump, jump like a kangaroo. Swim, swim, I come up to you. Take, take, take your hand if that's okay. And I say, such a beautiful day. Such a beautiful day. Such a beautiful day. Such a beautiful day. Then I fly, fly, fly like a kite. I feel strong, strong, strong as a tiger and as big, big, big as a giraffe. So high, 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 and I jump, jump, jump
heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning, sha la 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 la. La 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 la, sha la la in the evening, sha la 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 la, sha la 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 la, just for you. If your love's gone away just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows will return, and you'll be happy. Shout it sweet in a song. Listen to your heart, it is singing. My heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning, sha la 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 la, sha la la in the sunshine, sha la 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 la, sha la la in the evening, sha la 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 la, sha la 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 la, just for you. My heart goes sha la 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 la, sha la la in the morning, sha la 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 la, sha la la in the sunshine, sha la 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 la, sha la la in the evening, sha la 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 la, sha la 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 la, just for you, sha la 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 la, just for you. La la. They will collect the children after the speech of our correspondent, sir. Parents are requested to assemble near the green room. Let me first thank our small children for their mesmerizing performance. We
curriculum for every child, and the teachers play a vital role for bringing up the students. Parents are the strong support for us, and they can get themselves involved in this platform and grooming the students in academics, sports, or any other co-curricular activities. This small appreciation build up their morale and help them to express their abilities. Last year our school result was very good, and our management hoped that this year it would be better and more promising. We acknowledge the great effort being put in by NGM team since last few years, and the impact is very well felt. Lastly, I would like to thank principal, all the teachers, non-teaching staff, volunteers, and especially our students who came forward to make this event a successful and memorable one. Thank you, one and all. Thank you so much, sir, for addressing the gathering. जब भारत की बात हो ही रही है तो मुझे एक बात बता दिशा, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, why is India so great? ये देश महान क्यों है? Because by 2022 we destroyed China's population, या हमारा सिस्टम, लिटरेसी या एजुकेशन? नहीं, पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला देश है भारत, जहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। वह देश है भारत। Yes, it's true. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। By this beautiful quote, I would like to invite the students of our school for a beautiful patriotic song. Let's welcome them.
Gendadha, Gendadha, Gendadha. कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। अब जो हमें आगे बढ़ते हैं, अब जो हमें साथी है जैसे नानी है, अब जो हमें आगे बढ़ते हैं, अब जो हमें साथी है जैसे नानी है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघला, अब जो भी हो बादल बनके पत्थर है छाना, अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघला, अब जो भी हो बादल बनके पत्थर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे Thank you, students, for this wonderful performance. Now, I would like to inform you all that we are going live. Authority without wisdom is like a heavy axe without an edge. Nothing so conclusively proves a man's ability to lead others as whole he does from day to day. May I have the honor of inviting Reverend Father Jacob Thomas, Vice President of MGM Senior Secondary School, Sector 6, to address the gathering. Please, Father. Good evening, one and all. Your Grace, Alexios Mar Osebis, Dr. Abhishek Pallava, the chief guest for this August gathering. Sri S.V. Nandanwar, our special guest. Madam Vibhaja, the principal of KH Memorial School. Beloved principal, correspondent, managing committee members, the Honorable Trustee Secretary, and the entire fraternity of MGO Cathedral, Vilai. Distinguished guests on the other side, the MGM alumni, dear parents, beloved children,
and all those people who are seeing this event live on and in media. It's a matter of privilege and pride for me to stand in front of this august gathering to witness the 56th annual day of the MGM Senior Secondary School, Bhilai. The term 56 itself says that the presence of MGM School in Bhilai is more than half a decade now, more than that. The theme that we have chosen for today's function was अभिव्यक्ति. अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक जरिया जो हम अपने नन्हे बच्चों को देते हैं, जिनके कारण वो अपने जीवन में सफल होने में सीढ़ी दर सीढ़ी उनके हम साथ और उनके विकास के चौतरफा विकास के लिए सारे अभिभावकगणों के साथ उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकगण भी उनके साथ रहते हैं. मैं अपने वचनों को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूं, पर एक छोटा सा एक उदाहरण देके अपने वचनों को मैं विराम देना भी चाहता हूं. जैसे इस साल का जो थीम था अभिव्यक्ति, तारे जमीन पर एक पिक्चर आया हुआ था जो हम अच्छे से भली भांति उसे हम जानते हैं. बच्चों के जीवन में जो भी घटनाक्रम होता है उसे हमें जानने, परखने और समझने का, सोचने का या सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा ही बच्चों का विकास हर तरफ से होता है. There was a person whom the world has witnessed in the last many centuries. He is none other than Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, the person who invented light, electric bulb. You know that how many times he has failed in order to come up with this idea of the bulb? How many times he has failed? 100 बार, 50, 1000, 1500. उनके जीवन में कम से कम 2774 बार उनके जीवन में वो फेल हुआ है. एक बल्ब को बल्ब के तौर पर जलाने के लिए उनके जीवन में 2774 बार वो अपने जीवन में असफल हुआ. उसके बाद उन्होंने एक बल्ब जो आज हमारे सामने जल रहा है उसकी इस रूप में लाने में उसने चेष्टा किया. अगर उनके माँ बाप उस अभिव्यक्ति को वही कहीं रोक देता तो ऐसा होता नहीं कि आज हम इस बल्ब का जो विकास जो हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च में जो कुछ हम देख पाए हैं, हो सकता है कि कई सालों के बाद वो होता. इसलिए हर बच्चे अपने आप में, जैसे यहाँ पे हम छोटे बच्चे यहाँ पे कहा कि अपने आप में वो जीनियस है. हमारे स्कूल उन सारे बच्चों को ऐसा मौका देते हैं कि अपने अपने जीवनों में वो सफल हों. I would like to thank all the principal, the staff, as well as the non-teaching staff members, all those who are working untiringly round the clock to come to this 56th year on a trot. On behalf of the management, let me also assure the parents, all those who are here, आने वाले सालों में हमारी ये कोशिश रहेगा कि और भी अच्छे तरीके से स्कूल जो कुछ अच्छा सहूलियत, जो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे जो बच्चों को पढ़ने के लिए वो चाहिए उसे और मुहैया कराएगा. इन वचनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. जय भारत,
जय छत्तीसगढ़। जी जी पोल्यूशन काउंटर जी As a nation and as a country, our culture is important for our upbringing and who we are today. Culture is something that will live for rest of our life. Yes, what could be more wonderful than children representing our cherished culture? That's absolutely right. That's why our teachers and students of class 7 has decided to give us a piece of art which will portray every child is special and will also help you all go with smiles on your faces and with also flood of feelings and emotions. Let the children fly in the sky according to their wish. Now, brace yourself, and I would like to invite our dear blessed dancers for their heart-touching performance. Can I expect a huge round of applause? इस पे लाल बटन लगानी है कि नहीं? Thank you.
That was a wonderful presentation by our 137 students of class 7. I request you all to give a huge round of applause to the students. Annual report is like a mirror that reflects all the activities carried out during the academic year. Now I request our principal sir, Dr. B.D. Tharagan, for the annual report. Please, sir. ले लो, आप वाइट ले लो। मेरा तो चलता है।
Very respected His Grace Alexios Mar Eusebius, our Manager Bishop and Metropolitan of Calcutta Diocese, Chief Guest of the occasion Dr. Abhishek Pallava, Superintendent of Police District Durg, Shri S.V. Nandanwar, Chief General Manager, Town Administration, Mrs. Vibhaja, City Coordinator, CBSE, Reverend Father Jacob Thomas, our Vice President, Mr. Shrinu Cherian, Assistant Vicar, Mr. K.C. Matthew, Honorable Correspondent of the school, Mr. Roy George, Secretary of MGO Cathedral, Sri Disney Varghese, Treasurer, MGO Cathedral, esteemed school and church managing committee members, Madam Anita Rajan, Madam Bina Matthew, the headmistress, Madam Shiny Joseph, and Madam Gina, the pre-primary in charge. My dear teachers, parents, and the students participating in this function. So report, there was a debate, how should we present a report? How should we present a report? So we thought we should do something different, because report is also an important part of an annual function. Is the volume okay? Can we raise the volume? Thank you. So let's have the bell. We have 27 crores of school-going students. Of that, some 12 crores go to private schools, be it as a school from private school or a government school. We push them into a class and we make them, pump them with different subjects, maths, science, English, and it goes on. And we have to accept and acknowledge a fact that listening is a painful skill. If you want to make people listen to you, you should be a good orator or a narrator, which is a scarce resource. So let us try to have some takeaways. The teacher in me wants me to have some takeaways from this particular function. मैं समझ रहा हूँ आप रंगारंग प्रोग्राम देखने आए हैं और इस वक्त मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, फिर भी इस तरह के एक मौके पर हम कुछ चुनिंदा बातें ना करें, हो सकता है हम इनकम्प्लीट रहें. So let's have an interaction process. So let us have the first question. Can you be seated? Can you be seated? Yeah. सर, इतने अच्छे कल्चरल इवेंट्स चल रहे हैं, इसके बीच में एनुअल रिपोर्ट जरूरी है क्या? सर, won't we feel bored? That is a very pertinent question. Annual report conventionally is read and I have a bunch of pages which I have to read. So one thing is very important. We make our class
joyful. The student should enjoy learning. And I'm very glad, due to our committed effort, consistent effort, sustained focus, we are able to do the content delivery in the most professional manner. You can see the classes are happening in our eco garden. The classes inside the classroom are having props. You're involving the students. My dear parents, पढ़ना, पढ़ाना और वाकई में पढ़ाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. And we are in that mission. And we are different. It was not an overnight job which we were doing. The committed teachers of this institution have worked very hard, many a times beyond the school hours, to have the impact felt. There was a learning in the process of giving, and I am strongly confident that first the teachers are getting empowered to empower our students. Can we have the next question, please? Sir, I saw the theme in our invitation card which says, "Every child is special, let's empower him or her." Sir, am I special? Any question on that? Children are gift of God. We were in a colonial rule. We were in the process of transition. We are coming out of the Thomas Macaulay's education system, where things were more narrow. We were developing or bringing out engineering clerks. Pallab साहब बेहतर बता सकते हैं how we were trained. I'm very glad there is a process of transformation which is going on. And at national level, of course, we are a massive school with 6,500 students. We have 145 sections. We have 900 classes running per day. We have taken a vow that each period will treat it as a product. When I see with the lens of treating it as a product, the obvious thing which comes to my mind is the quality. All our teachers are now quality sensitive. They're getting trained repeatedly. They have started thinking in a new way. They have started writing, preparing their lesson plans in a different way. I'm not wrong if I say the nation is built in the classroom. If we have the clarity of thought of what we are doing, then we will not have distorted priorities. And if we avoid distorted priorities, then we will not have trail of negligence. Because if we have the trail of negligence, wherein the problems are piling up and we are not sensitive to the age of a child, I always tell my teachers, formative years na mile dobara. You won't get that formative age back. What has to be taught in the pre-primary
has to be taught in the pre-primary. So this school is moving in a very scientific manner. Very scientific manner. We have a very strong think tank working day in and day out. How should we take our next step? Every class is getting improved day by day. तो यहाँ पे मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा, आपकी भी ज़रूरत है। आप एक क्षण के लिए सोच के देखिए, आपका बच्चा आपके लिए स्पेशल है कि नहीं? क्या हम मिलकर उसका एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं कि नहीं? आज हम सुनते हैं बच्चे भटक जाते हैं कुछ सालों बाद, और बड़ा मुश्किल होता है एक एज के बाद उनको एक लाइन में लाना. So the coveted teachers of the school, in fact the whole teaching and non-teaching staff, they are working day in and day out to ensure that we utilize the time and teach them what they are to be taught. Here we are making things measurable. पहले ऐसा नहीं होता था. We are making things measurable. For example, the reading speed now can be measured. Class-wise, उसकी क्या reading speed होनी चाहिए? What is the importance of foundational literacy and numeracy? बुनियादी साक्षरता और आंकड़ों की समझ, इसकी अहमियत क्या है? ये जान के जब हम लोग क्लासेस लेते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है. We have embraced technology and I'm very glad to say, I'm very glad to inform, things are evolving. Our needs are increasing. When we take such a massive job, we are supposed to digitalize things. We have to embrace technology. There's something called student profile. We have already prepared student profile. Different schools are asking us to share the student profile to them, and we will be doing that. Let me tell you, MGM is not in the phase of competition. This is a 57-year-old institution. It is high time we become a model institution for others. We come up to the expectation of the society of being a model school for others. And I'm sure this team is empowered and getting empowered to reach that particular pinnacle. Can we have the next question, please? Sir, what makes us different from our contemporaries? Yes, that is a very pertinent question. As I said, we are not in the process of running a race in the competition, but we ensure that we take up every circular of CBSE very positively. Like the National Education Policy, it speaks about many things, but it is very important. What is our perspective towards National Education Policy? It is clearly becoming a medium for our self-improvement. Now we have a framework which is established, and it is based on various strong referral documents. We have something called School Quality Assessment and Assurance Framework. We have something called National Curriculum Framework. We have something called NIPUN. We have something called Nishtha. So for everything, we have a referral document. So things are going very scientifically, and it is not according to our whims and fancies we are doing. We are doing on a very well-established, thorough scientific process.
Number two, as we said, we are nurturing every child. Everybody is a learning. This is a temple of learning, be it the principal or the teaching or non-teaching staff. The small kid who came and compared today, I could learn many things from him. I had a talk with him. He said, this school is like my temple. I asked further. He said, these are my goddesses. This is my Lakshmi Devi. This is my Durga Mata. So that is the kind of attitude the child is having. So everybody is learning from their own experiences on a daily basis. सर, मेरी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे इस एमजेएम स्कूल में क्या कोई योजना है? फ्रेंड्स, एक बहुत ही अनूठा प्रयास किया गया कोविड समय में। कोविड although gave us lot of disruptions, lot of pain, but it gave us many good things also. It helped us to learn the importance of technology. Apart from that, I had a group of parents. During our interaction, it came from them. What could we do for those students who are underprivileged, who are on the verge of discontinuing their education? Friends, let's have a clapping for all the parents. Thank you. It is because of you, not a single child, because of his financial background, has been asked to discontinue from his studies. In fact, we have gone one step further of helping him for meeting his necessity. And this is proudly done, silently done by some of the donors. यहाँ पे कुछ लोग already present हैं. हम चाहेंगे उनको भी हम लोग felicitate करें during our prize distribution. So that has also evolved, and scientifically we want to be a model school which speaks of self-reliance. We want to write a thesis on economics, how a school with differentiated background can become a self-reliant institution. वो बच्चे ने कोई गलती नहीं की अगर वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ है। हमारा दायित्व बनता है हम उसको भी गोद लें, वो ना भटके। तो ये ऐसी बात नहीं, आई एम नॉट रेटोरिक हियर, समा बांधने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। ये सारी चीजें जो हैं होती आ रही हैं और होगी। हम ये पहचान बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। This we are doing for our self-satisfaction. Do we have any more questions? So as it is said, questions are formidable for the best prepared, because anybody can ask what the wisest cannot answer. So I will shoot some questions to my students. Who would like to answer? So there are more than one. So can you tell me, how do you feel empowered in this institution? सर, हमारे क्लास में इंग्लिश ग्रामर और स्पेल बी टेस्ट हुए। उसमें हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन पूछे गए। मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आया, और मेरी सोशल और मैथ्स की टीचर ने मुझे केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया है। Great. Can we have a clapping for those teachers who took the special initiative? Can we have the next? Sir, we were taken to our school's eco garden. We saw many shrubs, herbs, creepers and climbers. Our science teacher also explained us about different types of roots, veins and leaves,
and soils. We want to go there every day and learn about new kinds of plants. Great. This is a part of experiential learning, activity-oriented learning. Now the teachers are working very hard. One class of lecture, at least they are working for 2-3 hours. They are thinking very in a pointed manner, and that is where two things come. One is competency-based education. हमारा उद्देश्य क्वालिफिकेशन बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य मात्र एजुकेशन दिलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों की क्षमता बढ़ाएं. Competency is made of 4 things. One is knowledge, second is skill, third is ability to apply this knowledge and skill, and the fourth most important part is your attitude. We are trying to mold them with the best kind of attitude so that they are competent, they are not dependent, they are not a liability to the society. They become competent professionals in the society. Any more? Yes, sir. In our school assembly, we get to know many information about various activities conducted in our school through WhatsApp and e-portal. I am a commerce student and still I can opt data science as 6th subject. Our school has taken an initiative to opt 6th subject. I feel special as I get opportunity to perform my talent in dance on the stage. Great. Data science, artificial intelligence, coding. Now this is a part of our life. We have implemented cross-functional discipline intermixing. Now a commerce student can think of opting data science. We are pioneers in introducing artificial intelligence. Our students are appearing in class 12. It has got implemented from class 9. Think of a situation. I was just interacting with some alumni who came to collect certificate, and they are feeling, had it been introduced one year earlier, they would have been more empowered. So we are updating with the time, and our sole objective is making the student competent because they are special. I would be incomplete if I don't acknowledge the wholehearted support of the management. Whatever good things we are doing, they are wholeheartedly supporting. That is why we have a seamless, smooth implementation of the very many programs. यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मुख्तलिफ तौर पर देखा जाता है कि कई परियोजनाएं बनती हैं, पर कई परियोजनाएं जो हैं अपने अंजाम तक मुकम्मल नहीं हो पाती हैं. पर एमजीएम के मामले में अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम एक अलग पहचान ऑलरेडी रखे हुए हैं और हमारी मंजिल को है कि बहुत आगे जाना है. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया. हम लोग संकल्प लें, हम लोग मिल के काम करें आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि जब आपका बच्चा ऊपर उठेगा, when you have the holistic development for your child, we feel much satisfied and we grow with you. Thank you very much. Thank you, sir, for presenting the report in a very different manner. More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More bliss, less stress. More love, less hate. We are indeed blessed by the gracious presence of our Manager Bishop
His Grace Alexius Mar Eusebius. I request His Grace to bless the august gathering. चालू है ना वो भी चालू है Good evening, distinguished guests, respected clergymen, managing committee members of the school and the cathedral church, principal, teachers, parents and my dear students. This is a very beautiful evening. The annual day of MGM Higher Secondary School is well arranged and beautifully presented. The principal presented the report in a very different way. Usually, when the report is presenting, it is in a monotonous way and everybody feel bored. Very scientifically, our principal presented the report. I appreciate the principal for that. The report is the history. I believe that this history is true and correct. That is why he very courageously presented the history very well here before this august audience. MGM became a brand name in this part of the region. You know that two great saintly people are pioneered for the development of this institution. One is the great saint Mar Gregorios of Parimala. The other one, a saintly man, the founder bishop Mar Theodosius. Their prayers and intercession is very well with all the MGM institutions of our diocese. And because of that, our institutions are very well accepted by the community everywhere in this part of the region. And these days, I am attending the annual days of the MGM schools. I am so happy and proudly says all the MGM schools everywhere we have are running or working or serving the community and the education ministry very well. I appreciate the principal, the teachers, the correspondents and the managing committee members, everyone who are managing this institution. The teachers and the students, you are the ambassadors of MGM school. You are the ambassadors of the MGM school. The teachers and the students, you are bringing a reputation to this institution. When the report was presented, it was said that each and every student is very well taken care and his or her holistic development is nurtured here. Do you know a bonsai plant? Bonsai plant, I think you can see somewhere here also. Everywhere we have bonsai plant. How a bonsai plant is made? A plant which can grow in an open air or a ground very freely with a lot of branches, giving shelters to birds, shadow to the people who are coming under beneath it, or giving much fruit, can be planted in a pot by cutting its branches and roots. That looks very beautiful, and we keep it in our house. I have bonsai plant in my with me here in my house. It costs
much amount. It is very costly, but it won't give fruit. It won't give any fruit to anything, to the humankind or birds or anything. No values it get. Sometimes some of our kids are growing like bonsai plant. Their abilities, their talents were cut down, and we grow them, we nurture them in our own interest like a plant in a pot. MGM schools are not for that. MGM schools are to nurture the abilities and talents of each individual. The abilities and talents of each individual, and make each citizen, each individual, each student a better citizens of our country. For that purpose, we started MGM school. For us, this is not a business institution. This is not for making money. This is a service to the community. According to the teaching of Jesus Christ, we start education institutions as a service to the society, so that each and every child should grow in its full strength. So we have the theme, beautiful theme this year today. For us, annual day, every child is special. I must say, every child is important and significant. Every child is important and significant. And that way, our education mission has to develop. I sincerely appreciate each one of you, the principal, teachers, the parents and students, and one and all gathered here, for taking care of your children to become great citizens of India. May God bless you all. Thank you. Thank you, His Grace, for addressing the gathering. We welcome Reverend Fathers for the 56th Annual Day celebration of our school. An optimist is one who makes opportunities of his difficulties. The title that suits him is the character of an honest man who possesses firmness and virtue enough to maintain the enviable of all titles. Accomplishing the impossible is his way of performing his duties. If you look at his portraits, they always give you an indelible impression of his great height. One such indomitable, spirited, eminent personality we have with us is our respected Superintendent of Police, Dr. Abhishek Pallav. May I have the privilege of requesting him to preside over the function and address the gathering. Please, sir. Respected dignitaries, parents और प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आने में, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है। बहुत खुशी की बात है कि काफी बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। जिस बड़ी संख्या में पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, ये दिखा रहा है कि उनके बच्चों के प्रति जो उनका विश्वास है और बच्चों के प्रति जो उनके एस्पिरेशंस हैं। प्रिंसिपल सर ने बताया कि किस तरह से इनोवेटिव और साइंटिफिक तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं बच्चों से एक ही आह्वान करूंगा कि पढ़ाई के साथ एक हम मॉरल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि समाज में ये देखा जा रहा है कि बच्चे जब स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं तो काफी तेजी से डिटोरिएशन आ रहा है। आप सड़क में देख सकते, जो एडिक्शन है टोबैको, अल्कोहल, कैनबिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन इंटरनेट के इफेक्ट्स में अच्छे प्रभाव के साथ दुष्प्रभाव भी आ रहे हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो बच्चों को समय दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों को हमने स्कूल में डाल दिया
तो हमने अपनी जिम्मेदारी स्कूल को शिफ्ट कर दी। यदि आप अपने 1 या 2 बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो स्कूल को 7,000-7,500 बच्चों का ध्यान देना कितना मुश्किल है, आप सोच के देखें। काफी बच्चों को जब हम समय देंगे तो उनकी हम फीलिंग समझ पाएंगे, बच्चों की प्रॉब्लम समझ पाएंगे। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि हम एक फॉल्स कम्युनिकेशन, फॉल्स फ्रेंडशिप के चक्कर में लोग सोशल मीडिया में फ्रेंडशिप, फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, लोगों के हजारों फ्रेंड हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपनी बात रख पाए। वो अपने हॉलोनेस को दूर करने के लिए इधर उधर भटक रहा है। सभी पेरेंट्स को जरूरी है कि बच्चों को डेली 1 से 2 घंटे दें, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है समझने की कोशिश करें। जब आप बच्चों को समय दोगे तो आप समझ पाएंगे कि बच्चे जो हैं वो क्या अपेक्षाएं हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं। जब आप बच्चों की प्रॉब्लम समझोगे तो उसके सॉल्यूशंस आप ढूंढ पाओगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम पेरेंट्स के अपने एक्सपेक्टेशन है, अपने अरमान है, जो उन्होंने अपना टाइम पूरा नहीं कर पाए, वो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम बच्चों से अनड्यू एक्सपेक्टेशंस ना करें। ये एक रियलिटी है कि अब 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, बच्चे काफी रात में सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे एग्जाम में मेंटल कोलैप्स हो रहे हैं। कंपटीशन है, निश्चित बात है, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव देश में हम हैं, लगातार कंपटीशन है, लेकिन किस एज में बच्चा कितना स्ट्रेस झेल सकता है इसकी भी आवश्यकता है। जैसा बताया कि हर बच्चा अलग अलग चीज में स्पेशल रहता है। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटे के पीटीएम में गया, मैं देखा टीचर जो है बच्चे के बारे में ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, बगल में 3-4 बच्चे खड़े हैं, 3-4 पेरेंट्स खड़े। यदि हम बच्चे को इतने दूसरे बच्चों के सामने अशेम करेंगे तो आप सोचिए उसके सेल्फ एस्टीम पे क्या असर पड़ेगा। बच्चों को मोटिवेट करके रखना बहुत जरूरी है। ये एक लंबी रेस है, इस रेस में आज जो आगे है कल पीछे हो सकता है, कल जो पीछे है वो आगे हो सकता है। बच्चे को हमें रेजिलिएंट बनाना है, बच्चे को हमें कॉन्फिडेंस देना है, बच्चे के जो उसका परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअली इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि एक चिल्ड्रन की प्रोफाइल बनती है, वो प्रोफाइल में जरूरी है कि हम जितने वीकनेस गिनाएं हम बच्चे के उतने स्ट्रेंथ भी गिनाएं। ऐसा प्रोफाइल बनाने से क्या फायदा, किसी एक बच्चे की हम 1 स्ट्रेंथ बता रहे हैं और 10 वीकनेस बचा रहे हैं। मेरा बेटा 5वीं में पढ़ता है, वो क्लास को आया, मेरे एडिशनल साहब के बेटे हैं, उनके बारे में बताया कि पापा उसको तो 8/20 आया, टीचर ने उसको रिमेडियल क्लास में डाल दिया। अब ये कैसा रिमेडियल क्लास, वो बच्चा तो स्टिग्मेटाइज हो गया, पूरे क्लास में अनाउंस कर रहे हैं कि इस बच्चे को रिमेडियल क्लास में डाल दिया गया। आप उस बच्चे का सोचिए, वो हम इस उम्र में 35 साल 40 साल की उम्र में स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। वो बच्चा जो 8 साल 10 साल 12 साल का है उसको हमने बाकी बच्चों से अलग कर दिया। कुछ बच्चों को हम स्पेशल क्लासेस में डाल देते हैं। जब हम पूरा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो बच्चा स्पेशल क्लास में जा रहा है तो बच्चा क्या स्पेशल लर्न कर पाएगा। बहुत जरूरी है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन रखें, एक्सक्लूसिव ना करें। यदि हम एक्सक्लूसिव कर रहे हैं तो एक मैंडेट के साथ करें, बच्चे के मोरल के आधार पर ना करें। हम जाने बच्चे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। हर सब्जेक्ट की नॉलेज जरूरी है, लेकिन कोई बच्चा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वीक है तो उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। टीचर वो अच्छा है, हमें क्रिटिक नहीं बनना, हमें टीचर बनना है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ज्यादातर लोग क्रिटिक हो गए हैं कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इस देश की बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि अब समस्याएं बहुत गिनाते हैं, हम सोल्यूशन नहीं बताते। जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स के लिए बच्चा बहुत प्यारा है। मैं तो साइकियाट्रिस्ट रहा हूं, मैं तो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों के साथ काम किया। जिन बच्चों की बुद्धि कम होती है उनके पेरेंट्स के लिए बच्चा स्पेशल होता है। बच्चा स्पेशल है कि नहीं वो आप उनके पेरेंट्स से पूछें। हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा स्पेशल है, टीचर के लिए हो या ना हो। और एक भावना होती है उस बच्चे के साथ। जो भी लोग पेरेंट्स बने हैं वो उसको समझ सकते हैं कि भाषण देना एक चीज है, अपने बच्चे होते हैं तब आदमी उस चीज को समझता है। हर बच्चा अच्छा करना चाहता है,
जब तक कम से कम वो 5वीं 6वीं तक क्यों ना हो। हर बच्चा अच्छे करने की कोशिश करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि यदि 24 घंटे का दिन है तो 6 घंटे बच्चा सोता है, 8 घंटे स्कूल में रहता है, 2-3 घंटे ट्यूशन करता है, तो जगने का टाइम का 50% टाइम वो स्कूल में रहता है। सबसे ज्यादा बच्चे का सोशल नेटवर्किंग स्कूल में रहता है। तो कोई बच्चा नहीं चाहता कि स्कूल में वो खराब परफॉर्म करे, स्कूल में वो अलग हो जाए। स्कूल में क्योंकि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ाई से और को करिकुलर एक्टिविटीज पे होता है। मुझे ध्यान है जब बचपन में था तो मैं स्टटरिंग करता था भाषण बोलने में, कभी स्टेज पे नहीं आ पाता था। को करिकुलर एक्टिविटी होती थी तो कभी स्टेज पर नहीं आया मैं आज तक। मैं जानता हूं क्या फील होता है उस बच्चे को जो पीछे छूट जाता है, बाकी लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता। ये चीज हम बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं। हमें यह भी देखना है कि बच्चों को ओवरबर्डन ना करें, बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए समय दें। यदि बच्चों को मोनोटोनस बना देंगे तो बच्चा कभी क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। क्रिएटिविटी बर्डन पे नहीं होता। क्रिएटिविटी तब आती है जब बच्चा सोचता है, बच्चे को एक खाली समय मिलता है। आज के टाइम में ये भी एक प्रॉब्लम है, बच्चा स्कूल से आया, 5 तरह के ट्यूशन, म्यूजिक का भी ट्यूशन, क्राफ्ट का भी ट्यूशन, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहा है, फिर उसमें सेल्फ स्टडी भी हम अपेक्षा करते हैं। बच्चा कहां से कर पाएगा? बच्चे को ना बैठने का समय है, ना सोचने का समय है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरे को देख के अपने बच्चे का डिसाइड ना करें। हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअलाइज करें बच्चे की जरूरतें क्या है, बच्चे को किससे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन की आवश्यकता है कि नहीं है, बच्चे को एक्स्ट्रा कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। हम एक चूहे की दौड़ में घुस गए हैं। हमने सुना कि वो टीचर अच्छा है, उससे वो 5 बच्चे ट्यूशन दे रहे हैं, हमने अपने बच्चे को भी धकेल दिया। क्या बच्चे को उस सब्जेक्ट में ट्यूशन की आवश्यकता है? किसमें आवश्यक सब्जेक्ट में है, किसमें नहीं है? जैसे सर ने कहा, इंटरक्रेटिव लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, बहुत तरह की लर्निंग है, लेकिन क्या बच्चा उस चीज से लर्न कर पा रहा है? कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं। जो स्लो लर्नर होते हैं वो धीरे लर्न करते हैं, लंबे टाइम तक रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी लर्न करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं, समझते हैं। कुछ बच्चे याद जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे याद जल्दी नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को नंबर से प्रॉब्लम होती है। हैंडराइटिंग बच्चे की खराब है, तो कैसे हैंडराइटिंग ठीक करना है, हमें ये सोचना है। हम बच्चे को, पेरेंट्स को बोलते हैं आपके बच्चे की हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, आपके बच्चे को पूरे क्लास के सामने बोलते हैं इसकी हैंडराइटिंग सबसे खराब है। कृपया बच्चों को सबके सामने जज ना करें, कभी भी पब्लिकली रिजल्ट डिक्लेयर ना करें। ये भी इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्लास में बोलते हैं हाईएस्ट मार्क्स इसको आया, चलिए हाईएस्ट हमने बता दिया, हम तो लोएस्ट भी बता देते हैं। और आप सोचिए जिस बच्चे का हमने लोएस्ट घोषित किया उसके सेल्फ मोरल पे क्या असर पड़ेगा। हम बच्चों को मेंटली रेजिलिएंट नहीं बना पा रहे हैं, ये कमी है। यही कारण है कि हम पहले कहते थे विदेशों से ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी आज के दिन में भारत के बच्चों में है। यदि हम भारत को 22वीं सदी में विश्व पावर बनाने की बात कर रहे हैं तो हम मजबूत बच्चों के बिना नहीं बना सकते। और मजबूती केवल फिजिकल हेल्थ से नहीं, मेंटल हेल्थ से भी होती है। और जरूरी है कि पेरेंट्स भी मेंटली हेल्थ, देखिए बच्चा आपका अच्छा करे खराब करे, आप बच्चों को बदल नहीं सकते। अपना बच्चा अपना ही रहता है। ये कोई मार्केट में खरीदने वाला आलू गोभी भिंडी नहीं है, जो पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ दिया हमने, और कोई छोड़ भी नहीं सकता।
अपने बच्चे को पेरेंट्स सबसे अच्छी तरह समझे, वो केवल पीटीएम का इंतजार ना करे, बीच बीच में जाएं, टीचर से मिलें, टीचर से फीडबैक लें और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टीचर्स दें और उन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को घर वाले पालन मतलब कोशिश करें कि वो कार्यान्वित हो। केवल कमी जानने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को खेलने का समय दें, कूदने का समय दें, उनको 1 या 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट डेवलप कराएं। मैं देखता हूं एक ही बच्चा गा भी रहा है, बजा भी रहा है, खेल भी रहा है, डांस भी कर रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ऑलराउंडर सब कुछ करे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किताबों में अच्छा दिखता है, वो संभव नहीं है। किसी भी फील्ड में टॉप पे जाने के लिए, एक्सेल करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। और कृपया करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसी में बच्चों का इंटरेस्ट जगाएं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। बच्चों पे थोपे दें। बच्चे, मैं देखता हूं कुछ बच्चे बेचारे ड्राइंग नहीं कर पाते, उनके पीछे पड़े रहते हैं, ड्राइंग करो ड्राइंग करो। ये क्रिएटिव जो आर्ट्स है ये हर आदमी के बस का नहीं है। हुनर है जो भगवान ने बहुत लोगों को दिया है, बहुतों को नहीं दिया। अपने बच्चों के हुनर को समझें, बच्चों को हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करें, बच्चों को हमेशा समय देके जानने की कोशिश करें बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चे को परेशानी क्या है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की परेशानी ना समझ पाए, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को परेशानी बता ना पाए, ये पेरेंट्स की कहीं ना कहीं फेलियर है। टीचर्स को भी बहुत जरूरी है, हर बच्चों को अलग से 2 मिनट 5 मिनट बीच बीच में दें, उनसे जानने की कोशिश करें बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। यही कारण है कि स्कूल की आवश्यकता है। कोरोना काल आया, लोगों ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेज हो गई, जब कोरोना बंद होगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे। कोरोना चला गया, स्कूल बंद नहीं हुए। वेब फ्रीज आ गए लेकिन थिएटर बंद नहीं हुए। ऑनलाइन कैटरिंग आ गई, जोमेटो, लेकिन कभी होटल्स बंद नहीं हुए। ऑनलाइन टेलीमेडिसिन आ गया लेकिन हॉस्पिटल्स कभी बंद नहीं हुए। स्कूल एक बच्चे के कंपोजिट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दुनिया भर में ऐसा एक देश नहीं है जहां पे स्कूल्स ना हो। जब से सभ्यताएं आई हैं तब से डॉक्टर्स हुए हैं, पुलिस हुई है और स्कूल्स हुए हैं। वही समाज आगे बढ़ पाया है जिसने एजुकेशन पे और हेल्थ पे इन्वेस्ट किया है। मैं स्कूल को साधुवाद दूंगा कि लंबी इनकी इतिहास है, 52 साल 52 ईयर्स 56 ईयर्स का इनका इतिहास है। हजारों बच्चे यहां से निकले हैं और मुझे मालूम है एक प्रिंसिपल के लिए, एक टीचर के लिए उससे सुखद दिन नहीं होता जब उनका एलुमनाई, जब स्कूल एलुमनाई के नाम से जाना जाए, एलुमनाई स्कूल के नाम से ना जाना जाए। हर एलुमनाई ऐसा काम करे कि स्कूल का मान बढ़े, सम्मान बढ़े और स्कूल के लोग प्राउडली कह पाए ये हमारा बच्चा है। और जिस तरह से पेरेंट्स को बच्चों से प्यार होता है वैसे ही स्कूल को अपने बच्चों से होता है। जब मैं स्टेज पे आता हूं तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं जब मैं स्टेज पे नहीं आ पाता था, लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। आप देख सकते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मिंडो भाषण दे पाता हूं। सक्सेस से बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डर कुछ भी नहीं है और फेलियर से ज्यादा डिमोरलाइजिंग कुछ भी नहीं है। जब बच्चे फेल कर रहे हो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उसका हैंड होल्डिंग करें। जो बच्चे खराब कर रहे हो उनका हैंड होल्डिंग करना टीचर्स का काम है। जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे हैं उनका तो हैंड होल्डिंग नहीं भी करोगे तो अच्छा कर लेंगे। टीचर की काबिलियत है कि वो एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को ऊपर तक खींच के ले जाए और जब हम हर बच्चे को ऊपर तक खींच के ले जा पाएंगे तभी देश का निर्माण होगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वर्ड। तो अयान, चल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अयान, अयान कहाँ खो गया? कुछ नहीं सीखता, बस ये सोच रहा था कि इस बार अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा या नहीं। अयान तू डर मत, मुझे पूरा भरोसा है कि तू अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा और अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ नहीं होता। थैंक यू स्निग्धा मुझ पे भरोसा करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। अयान तो जिंदगी में एक चीज याद रखना, हर एक बच्चा स्टार होता है।
तो इसी इमोशन को एक सॉन्ग में रिप्रेजेंट करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट शारिक एंड लावण्या फॉर अ डुएट परफॉर्मेंस.
Thank you children for this melodious song. फोक डांस के बच्चे पीछे डोम एरिया में रेडी हैं, उनके पेरेंट्स उनको कलेक्ट कर सकते हैं. I now request our today's special guest, Shri S.V. Nandanwal, CGM Town Service and CSR, to please address the gathering. Please, sir. सभी को नमस्कार। आज के इस अभिव्यक्ति 2022 के कार्यक्रम में उपस्थित हिज ग्रेस एलेक्सियो मार्स, मैनेजर बिशप एंड मेट्रोपॉलिटन ऑफ कलकत्ता बीसीओस, हमारे आदरणीय और प्यारे अभिषेक पल्लव सर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दुर्ग, मैडम विभा झा, रेवरेंड जेकब थॉमस, रेवरेंड शीनू चेरियन, मिस्टर केसी मैथ्यू, श्री रॉय जॉर्ज, स्कूल एंड चर्च का मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस कार्यक्रम का जो थीम है कि हर बच्चा स्पेशल है और हमको उसको एम्पावर करना है। आज बहुत लेट भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जहां से शुरू करना चाहता था उसका काफी थीम जो है वो हमारे अभिषेक पल्लव सर ने बहुत अच्छे तरीके से सबको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बावजूद भी कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा। अपने करियर में मैं अपने 38 साल भिलाई स्टील प्लांट के अंदर लोहा गलाता रहा और लोहा गलाने के जो चैलेंजेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब अभी मेरे फैग एंड में मुझे जब टाउनशिप का संभालने का मौका मिला, टाउनशिप की देखभाल करने का मौका मिला, तो इसके साथ में मेरे इस जिम्मेदारी में भिलाई इस्पात संयंत्र की एजुकेशन की भी जिम्मेदारी दी गई और मेरे लिए पहला मौका था कि मैं इस शिक्षा के मंदिर का चैलेंजेस समझ पाऊं और इन चैलेंजेस में देखता हूं कि ऐसी चीजें जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, ऐसी सारी चीजें हो रही है जिसको हमको आंख खोल के देखना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, बच्चों से इंटरेक्ट करके उनसे समझना पड़ेगा और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका सॉल्यूशन निकालें। जहां तक सवाल है बच्चों को एम्पावर करने का, डेफिनेटली हमको बच्चों को एम्पावर करना ही है, लेकिन इस एम्पावरमेंट के साथ में उनको उस फील्ड में भी एजुकेट करना है, उस फील्ड के बारे में भी जो बताना है जिस रास्ते पे उनको नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव चीजें हम बताते रहेंगे, डूज हम बताते रहेंगे और डोंट्स हम लोग नहीं बताएंगे, तो इस बच्चे का जो हमारे घर पर 1 या 2 होते हैं, इनका सर्वांगीण विकास हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में
जैसा कि पल्लव सर ने कहा, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑनलाइन में जब बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोग जो साइबर की बाकी चीजें इसके बारे में जानकारी हुई है बच्चों को। गूगल हमारे पास है, हमारे पास भंडार है नॉलेज का जो आज के डेट में वेबसाइट में अवेलेबल है। इसमें कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बच्चों के लिए बुरी है। जो बुरी चीजें हैं उसके बारे में हर पेरेंट को समझना होगा, हर टीचर को समझना होगा। आज क्लास में यदि कोई बच्चा थोड़ी भी सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा हो तो टीचर की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के ऊपर ध्यान दे कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और इमीडिएट उसके पेरेंट को उस बारे में बताएं। और मेरी पेरेंट्स से विनती है कि यदि कोई निगेटिव खबर अपने बच्चे के बारे में स्कूल से आती है तो उस खबर को पॉजिटिवली ले। यदि आपको स्कूल में बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बच्चा आपका शायद किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिम इन फेस, फर्स्ट एटलीस्ट एक्सेप्ट कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। आज हमारी क्लास की बच्चियां, उनको हर चीज को समझाने की जरूरत है कि दुनिया कैसी है, हमको उसमें कैसे जीना है, कॉन्फिडेंटली कैसे जीना है। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको उस बच्चे को समझाना है कि वो आके बताए कि ऐसा गलत हो रहा है। यदि कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, आज के डेट में बहुत इजीली, मैं भिलाई की बात कर रहा हूं कि भिलाई आज के डेट में एजुकेशन हब बना हुआ है। आज कम से कम 10,000 बच्चे अपना करियर संवारने के लिए भिलाई में आके पढ़ रहे हैं। बट इन 10,000 बच्चों में 1%, 0.01% भी बच्चा डेविएट होता है, अपनी सोच से, अपनी गोल से डेविएट होता है, तो वो अपने साथ और 100 बच्चों को लेके जाता है उसी गलत रास्ते पे जिस पे वो जाना चाहता है। आज की डेट में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लेके आए, काउंसलिंग करें, पेरेंट्स को समझाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। सर ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है, मैं उसको फिर से बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। शायद हमारे बचपन में ऐसा नहीं था कि निगेटिव चीजें हमको समझाने की जरूरत पड़े, बट आज के डेट में ये हमारा बहुत बड़ा जो सर्कल बना हुआ है जिसमें हर चीज इजीली बच्चे के पास अवेलेबल है, वहां बच्चे को क्या सही क्या गलत बताना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों की आपस में जिम्मेदारी है कि यदि कोई बच्चा देखता है कि साथ वाला मेरा दोस्त या मेरा बेंच में बाजू में बैठने वाला लड़का कोई गलत रास्ते में जा रहा है, तो उसकी जानकारी वो उसके टीचर को दे। ये ना सोचे कि मैं उसकी चुगली कर रहा हूं। उस बच्चे के भवितव्य के लिए, उसके अच्छे भवितव्य के लिए ये चीज की जरूरत है। मैं ये सारी चीजें बार बार इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि मैं आज के डेट में इंचार्ज हूं एजुकेशन का भिलाई स्टील प्लांट के स्कूल्स का, और मेरे पास बहुत स्ट्रांग फीडबैक्स है कि स्कूल के आसपास बहुत सारे गलत लोग मंडरा रहे हैं, बहुत सारे गलत लोग गलत प्रवृत्ति में बच्चों को डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। स्कूल के प्रिंसिपल्स को, स्कूल के टीचर्स को देखना होगा कि क्या सिक्योरिटी गार्ड के बाहर की जो दुनिया है उसमें बच्चा कुछ तो गलत नहीं कर रहा है, और उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हमको कोशिश करना है। आज एनुअल डे का फंक्शन है, मस्ती का माहौल है, और इस मस्ती के माहौल में ये बातें करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, लेकिन ये फोरम है जहां पे पेरेंट्स अवेलेबल है, बच्चे अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है। इसलिए मैंने महसूस किया और समझा कि हमको इस बात को जरूर बोलना चाहिए
स्कूल के प्रबंधन से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पल्लव सर जो है वो MD साइकेट्री किए हैं, वो बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। स्कूल में हमको नशा मुक्ति, गुड टच, बैड टच, इस तरीके की सारी चीज़ों की कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और उनको इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। मैं स्कूल प्रबंधन का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि इस अगस्त गैदरिंग को और इतने अच्छे माहौल में मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसके लिए सबका धन्यवाद। Thank you, sir. Now we have the prize giving ceremony. I request our principal sir to escort our dignitaries on the dais for this. I request all the dignitaries on the stage to honor our students. We would like to honor our merit holders of class 10 and 12 board exam 2021-22. We are happy to announce that our 40 class 10 students secured above 90% in the board exam and 12 students from our class 12 gave a 90%. I request all the parents to give a huge round of applause to our students. We start with the class 12 merit holders, science stream. First merit and section topper Susan T.G. Verghese. She secured 96% and she is getting a cash prize of 14,000. She is the subject topper of English with 95%, Maths with 96% and Engineering Graphics with 98%. She was the first merit holder of MGM Senior Secondary School. I request all the parents to give a huge round of applause. Her mother is collecting on behalf of her. Second merit and the section topper, Sagar Nandakishore Soni, is getting a cash prize of 12,000. He is the section topper of 12 CS2 with at 94.8%. He is the subject topper of Maths with 96%, Physics with 97%, Chemistry with 99%. Second section topper of 12 CS2. Subject topper of Maths with 96%, Physics with 97%, Chemistry with 99%. The third merit and section topper is Shashank Kuldeep of 12 CS1 with 93.2%. He is getting a cash prize of 4,000 rupees. Next we have the third merit and section topper of 12 CS1, Shashank Kuldeep with 93.2% is getting a cash award of 4,000 rupees. Next we start with the commerce stream. The first merit and section topper of the commerce stream is Hemant Ray of 12 CIP3 with 94% is getting a cash award of 12,000 rupees. He is the subject topper of accountancy with 95%, business studies with 99%. Parents should give the huge round of applause. Their large effort for bringing this merit to our school. Second merit, Mamta Singh, 12 CIP3 with 89.2%. She is getting a cash award of 6,000 rupees.
Next, we have the third merit and section topper of 12 CIP1, Shreya Mishra with 89%. She's getting 6,000 rupees as a cash award. She's the subject topper of informatics practices with 94%. Now we have some of our students getting above 90%. Abhishek Jain, 12 CS2, 91.2%. Next we have Ashwardhan Sahu, 12 CS1 with 91%. He's getting a cash award of 3,000 rupees. The students are getting above 90%. Next we have D. Rahul Chaitanya of 12 CS1 with 90.6%, getting a cash award of 3,000 rupees. D. Rahul Chaitanya, his parents are collecting on behalf of him. Next we have Ansh Khandwe of 12 CS1 with 90.6%. His mother is collecting on behalf of him. Now we have the subject toppers and section toppers of class 12. Sanya Mary Thomas of 12 Bio PE. She was the subject topper of biology with 95%, and she's getting a cash award of 2,000 rupees. Her mother is collecting in behalf of. Next, Swastik Mishra is a section topper with 87.4% and subject topper of economics with 97%. Is getting a cash award of 3,000 rupees. He is the section topper of 12 CIP2. Next, we have Vishista Singh. Vishista Singh with 90.2%. She's the subject topper of biology with 95% and physical education with 96%. Shubham Tripathi with 92.2% is the subject topper of maths with 96% and chemistry with 99%. Next we have Sakshi Chaurasia of 12 CS2. She is the subject topper of computer science with 96%. Next is Siddharth Prakash Sahu, section topper with 92.4% of 12 Bio PE. Is the subject topper of physical education with 96%. Next we have Animesh Verma of 12 EG Maths, subject topper of engineering graphics with 98%. His father is receiving on behalf of him. And next we have the section topper of 12 Maths IP, NBS Vijay Kalyan with 86%.
NVS Vijay Kalyan, 12 Maths IP, 86% section topper. Krishna Sudhi, 12 Bio IP, 85.4% section topper. Aditya Jain, 12 Commerce Maths, 88.8%. Aditya Jain, 12 Commerce Maths, 88.8%. Richa Bisai, 12 CIP4 with 84.6%. Richa Bisai. Now we start with the class 10 merit holders, class 10 top 10 scorers. First merit, Rehan Farishta with 97%. Rehan Farishta with 97%. These are the class 10 top 10 scorers. Second merit, Purnaditya Das Manikpuri with 96.6%. Purnaditya Das Manikpuri with 96.6%. He was the second merit. Third merit, Abza Nas of 10I with 95.8%. Then we have Yami Sindram 10C 95.2%. Astha Maurya, Yami Sindram. Next we have Astha Maurya with 95.2%. Aisha Parveen, 94.8%. Next is Raghavendra Singh Kosare, 94.6%. Priyanshu Karmakar, 94.4%. Now we have the school toppers above 90%. That is from 93 to 94% we have Khushi Yadav with 94%, Ashutosh Singhal 93.6%, Chirag Goyal 93.6%, Zara Ansari 93.6%, Sia Singh 93.4%. Khushi Yadav, Ashutosh Singhal, Chirag Goyal, Zara Ansari, Sia Singh. This time we had 40 students securing above 90% in class 10. Next we have 92.1 to 92.9%. Tanya Chandra 10C with 92.8%. Aditya Kumar Sahu 92.8%. P. Vamshi Krishna 92.6%. C.H. Roshni 92.6%. Bhargavi Darbode 92.6%. Jayesh Verma 92.4%. Sandarsh Sahu 92.4%. Arman Pandey 92.4%, Vishesh Sahu 92.4%, Yuvraj Singh 92.4%. Next we have 92%, Pranav Wangte 92%, Simran Pal Singh, Bhavya Banchor and Nisha Jain.
92%. Pranav Wangde, Simran Pal Singh, Bhavya Banchor, Nisha Jain. Next. (91.1 to 91.9%). Aditya Sharma, Nikhil P, Sania Anil, Ananya Paswan. Aditya Sharma, Nikhil P, Sania Anil, Ananya Paswan. 91.1 to 91.9% the Silinar. Next we have 90% above. Twinkle Deshlehre, Shashwat Pandey, Roshan Gaikwad, Ayushi Sahu, Shriyansh Verma, Shiksha Gupta, Abhishek Mishra. Twinkle Deshlehre, Shashwat Pandey, Roshan Gaikwad, Ayushi Sahu, Shreyansh Verma, Shiksha Gupta, Abhishek Mishra. Now we have some of our endowment awards of cash prize of 1,000. Mrs. Varghese Lilikuti Award from class 1 and 2. V. Dev Akhil Reddy of class 2B. V. Dev Akhil Reddy of class 2B. It's an endowment award of 1,000 rupees. V. Dev Akhil Reddy of class 2B. Next we have Mrs. Sumita Banerjee Award for from class 3 to 5. D. Shalem Raj of class 5A. Sunita Banerjee Award. Class 3 to 5 from D. Shalem Raj of class 5A. Then we have again a Sunita Banerjee Award for class 6 to 8. Leela Mohan Sai Reddy of class 8I. Then we have Mrs. Varghese Lilikuti Award, class 9 to 12, S. Lokesh of 12 CIP 2. Every year we used to award an all-rounder of our school. So this year the all-rounder trophy goes to Parth Lanjewar of 12 CS1, is getting a cash prize of rupees 3,000. All-rounder means in sports, studies and in all the fields, so is the all-rounder of MGM Senior Secondary School. Next we are going to give Long Service Award. It's a proud privilege that we are going to honor our 9 teachers for rendering their long service by completing their 25 years in this institution. I request our manager bishop to honor our teachers with a memento, and I also request Madam Vibhaja, City Coordinator CBSE, to present shawl. Please, ma'am. Madam Elizabeth Anita Rajan, Headmistress First Shift from Physics Department, completed 25 years in 2020. Madam joined this institute in 1995.
Madam Swapna E. Chako, Pedagogical Expert Science from Chemistry Department, completed 25 years in 2020. Madam joined this institute in 1995. Madam Somi Sajeev, Head of Department Science and Pedagogical Expert Chemistry, completed 25 years in 2021. Madam joined this institute in 1996. Madam J. Shanta John, Pedagogical Expert Physics from Physics Department, completed 25 years in 2021. Madam joined this institute in 1996. Madam Asha Sujit, Pedagogical Expert Social Science, completed 25 years in 2021. Madam joined this institute in 1996. Next is Madam Minnie Burgess, Senior Teacher, Science Department, completed 25 years in 2022. Madam joined this institution in 1997. Next is Madam Veena Matthew, Headmistress, Second Shift from English Department, completed 25 years in 2022. Madam joined this institution in 1997. Next is Madam Jenny John, Senior Teacher Science from Biology Department, completed 25 years in 2022. Madam joined this institution in 1997. Next is Madam Rosie S. Thomas, Pedagogical Expert, Science, Social Science, completed 25 years in 2022. Madam joined this institution in 1997. Our MGM Share and Care Dream Project was launched on 26th January 2021, which has entered the second phase in the month of August 2022. On behalf of the MGM fraternity, we take great pride in acknowledging the kind gesture of those wholehearted sponsors. First, I call upon Mrs. Maya Vishwas. I request all the parents to give a huge round of applause for giving her gift for the Share and Care project.
manager of this institution, I would like to appreciate these three individuals who voluntarily came to these institutions and taken care of many of the issues of our students. Thank you so much. I appreciate it once again. Next we have Mr. Ramesh Chandra. Mr. Ramesh Chandra. Next we have Mr. Jasdev Singh Jabbal, who had generously contributed towards this noble initiative. On behalf of the school management, staff, parents and students who all contributed towards this noble cause, I request our principal sir to kindly accept this memento. I request our chief guest and manager bishop to kindly hand over this memento to our principal sir. MGM family is very much privileged to have His grace with us. I request our honorable correspondent, Sri Casey Matthew, to honor His grace with a memento. I request all the parents and guests to give a huge round of applause. Our manager bishop, our correspondent will honor our manager bishop. I request Reverend Father Jacob Thomas to please honor our today's chief guest with a memento as a token of love and gratitude from MGM family. Please, Father. I request our NGO Cathedral Secretary to honor our special guest, Mr. Roy George, our special guest, SP Nandan Master. Now I request our NGO Cathedral Treasurer to honor Madam Vibhaja, CBSE Coordinator, City Coordinator of CBSE. Thank you all the dignitaries. I request our principal sir to escort our guests off the dais. Now we'll continue with our cultural activities. I request you all to give a huge round of applause for all our teachers. So Ayan, what next? Do you really want to know? Of course. अब बारी है हमारे परफॉर्मेंस के रोलर कोस्टर राइड की. Snigdha, don't you think so? Others can help you arrive at your own understanding, but no one will solve your problems for you. Yes, Ayan, even in the circumstances where someone else is acting as an authority or a partner, only you can decide for yourself how you will process the situation. Our next performance is also based on a similar note, where our batchmates will inspire you how to deal with your own problems. So, fasten your seatbelt and get ready for a power-packed performance by the outgoing batch, which we ensure that you will all remember.
This is a story of a boy who is an introvert and has a problem of stammering and gets bullied by his own friends. After all this mental trauma, he left the school and took admission into MGM, where he got supportive friend circle and got motivated to overcome the challenges and hurdles of life. इस दुनिया में कुछ ऐसे नियम हैं जो दूसरों को देखकर बनाए गए और तुम पे डाले गए। अपने नियम ऐसे बनाओ कि दुनिया उसे माने। जो भी करो पूरे जुनून के साथ करो, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो या डांस या फिर कुछ। अगर उसमें जुनून ना हो तो उसका होना ना होना एक बराबर है। ना झुकेगा ये सर। जान लेके किस्मत में बांटे हैं, राहों में कांटे हैं, रोके रुको गिरा मैं रेगिस्तानों में आग है जितनी है लहू खो देता मेरा एक जगह में फिर भी खाक सारों खाक ही काफी नस मुझको है खामोशी मेरी बेजुबान
he became successful and overcame all the challenges and problems of life. So he invites his friends for the last performance of their school life. सर झुका के कर सलाम है शाम शाम आसमां से आ गिरी है शाम शानदार चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार नच का दीवाना वो देखता जमाना ओ मोरी दुनिया सी पटिया Wow, what a performance, guys. I'm still getting the vibes of the dance. So let's introduce our next competitors and dancers. So here comes our next anchors. Hey Janvi, I want to ask you something. हाँ बोलना बाशिर. If you want to choose between Indian and Western dance, what will you choose? Of course, it's Indian. But I want to choose Western dance. पर इंडियन डांस में स्टोरी और स्पिरिचुअलिटी होती है. Well, Western dance में fun and motivation होता है. Indian dance is better. Western is better. Indian. Western. Indian. Western. Okay, let's stop it. क्यों ना हम इंडियन डांस और वेस्टर्न डांस का फ्यूजन कर दें? Okay, great idea. So let's call upon our Indo-Western dancers to perform our fusion. तो इसका मतलब फलक डबल होने वाला है. Yes. Are we ready? Yes, give a big round of applause to our dancers. लास्ट वाला था फिर आगे. और कितना देर चलेगा? और कितना देर? लास्ट बोला था.
अभी एंड बोले थे और हाँ यार किससे चालू कर दिए समझ नहीं चीफ गेस्ट के सामने बोले चीफ गेस्ट It was just an incredible performance. A great round of applause for our students. A beautiful play enhances the mood of any event. What comes to your mind? When we hear the word skit, great playwrights of yesteryears like Shakespeare, Arthur Williams, and many more enchanted writers. Now we have the students of class 9th and 10th putting up a mesmerizing skit to please you and to transmit the thought of education of girl child through the skit Bholi and her indomitable spirit. So have a huge round of applause for them, guys. ठंडी लग रही है चीफ गेस्ट चला गया The indomitable spirit of Bholi. This skit is about a girl named Bholi whose real name was Sulekha. From her very childhood, she was neglected at home because when she was 10 months old, she fell from the cot and had damaged a portion of her brain. That's why she remained a backward child. At birth, this child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she was attacked by smallpox. So, her entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. She could not speak till she was 5 years of age, and she stammered every time. All of Ramlal's children, except Bholi, were healthy and strong.
But father was worried about Bholi, as she was neither good looking nor intelligent. When she was 7 years old, a primary school for girls was opened in their village. One day, the Tehsildar visits Ramlal's house. Are you aware? There is a new primary school opened up for girls in your village. Oh, really? Well, that's great. So, what are your thoughts on that? Well, I think to develop a primary school in the village for young girls is a very good idea. As a revenue official, you are the representative of the government in the village. And so, you must set an example to the villagers. You must send at least one of your daughters to the school. Okay, I will think about that. Why did the Tehsildar come to our house? Oh, well, he said that there is a new primary school opened in a village for girls, and to set an example for the villagers, we have to send at least one of our daughters to school. Are you crazy? If girls go to school, who will marry them? Well, I guess now we are left with no other choice, and I dare not disobey the Tehsildar. What a headache. Well, if that's the case, then listen, I will tell you what to do. Let's send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. Okay, let's discuss about it later. The next day, Ramlal takes Bholi to school. Bholi, come with me. I will take you to school. No. What's the matter with you? You fool? I'm only taking you to school. Rekha, let her wear some decent clothes today. Or else, what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? Bholi's teacher played a very important role in changing her life. She encouraged her to speak out her name without any fear. The headmistress took Bholi to the classroom and she was looking at the pictures on the wall. Good morning, children. Good morning, teacher. What's your name, little one? Bholi started sobbing. Get up. Now tell me your name. Bholi broke into sweat but tried her best not to stammer. Yes, you can do it. Come on, now tell me your full name. Bholi. Well done. Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Really? Yes, why not? It will be very easy. You just have to come to school every day. Will you come? No, say it loud. Yes. Didn't I tell you, you can speak like everyone else? Now take this book. In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time, you will be more learned than anyone else in this village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. Years passed. Now Bholi's parents are talking about her marriage. Then, shall I accept Bishambar's proposal? Yes, certainly. Bholi will be very lucky to get such a well-to-do groom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not even asking for any dowry. That's right, but he's not so young, you know, almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. So, what does it matter? 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and a lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Bholi will say. Oh, what will the witless one say? She is like a dumb cow.
Maybe you are right. The wedding ceremony. Bholi's sisters, being jealous, they talk about her grand wedding. She is so lucky. She is being married to such a well-to-do groom. Yeah, he's a well-to-do grocer. He even has a house of his own and also several thousands in the bank. Wow, just look at the grand barat he's coming with. Yeah, he must have spent a lot of money on this. Here, age does not matter. Alright, now let's go and welcome them. Now comes the grand barat. You may bring the bride now. Now, the priest hands over the garlands to the bride and the groom. What are you waiting for? Go garland the bride. Have you seen her? She has pockmarks on her face. So what? You are not young either. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. Bishambar calls Ramlal to a corner. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. No, 5,000 rupees or else we go back. Keep your dumb daughter. Please be a little considerate. If you go back, I can never show my face again in this village. Then give out 5,000. Poor Ramlal gave the greedy Bishambar 5,000 rupees with a sad face. Give me the garland. The bride rejects the wedding and throws off the garland. Pitaji, take back your money. I'm not going to marry this man. Everyone became puzzled and surprised. The guests began to whisper. So shameless, so ugly, and so shameless. How can she do that? So ugly. She's shameless. Yeah, how can she do that? Is she crazy? She'll have to bear with the consequences. I think she's gone mad. How can she just reject the wedding? So shameless. So shameless. Bholi, are you crazy? You want to disgrace your family? Have some regard for our izzat. Yes, father. For the sake of your izzat, I was willing to marry this lame old man. But I'll not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. What has Bholi done? Who will marry her now? What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Yes, auntie, you're right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted me to hand her to this heartless creature. But now, the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? Bishambar Nag started to go back with his party. The bandsmen, all confused, played the closing song. After a while, the crowd goes back. Bholi, but what about you now? No one will ever marry you. What shall we do with you? Don't you worry, Pitaji. In your old age, I'll serve you and mother, and I'll teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? Yes, Bholi, of course. In today's world, if you have to stand, you should come up with your opinion. You have taken a right decision. You are also an integral part of the society. So, Bholi, with her indomitable spirit, became an example to the villagers. Incredible, guys, incredible. Wait, but that was not only incredible, it was also information. We all say Beti Bachao, Beti Padhao, but Bholi truly depicted the need of education in our life. Remember, girls, through education, we can empower ourselves and can oppress dominance. Through education, we can empower ourselves to be anything what we want. Be teachers, lawyers, politicians, doctors, or anything. I hope you remember that ki Beti Bachao, Beti Padhao is not only the thought we have in our mind. ये शाम मस्तानी
मदहोश किए जाए। अर्पण, तुम गाने सुनते हो? Of course, Maisha, कौन नहीं सुनता? Oh great, then which genre do you listen more often? Surely that's classical. सही कहते हैं लोग, पुराने गाने सुनकर तो मैं भी गुनगुनाने लगती हूँ। हाँ, संगीत वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया सुनती और समझती है। Music tells us about communication through emotions rather than words. It helps us to connect. It helps us to connect our soul and helps us to understand about our tradition and culture. Well, that's true. Indian classical music is one of the oldest medium of communication and tradition. It helps us to connect our soul to the Almighty God and Asian civilization. To present a beautiful classical fusion, here comes Shashwat to enchant our soul.
तू ना किट तक दादर गिर तक था दादर गिर तक था दादर गिर तक था अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे बाबा का बाबा दरी दा बाबा दरी दा अलबेला सजन आयो रे बाबा का बाबा दा बाबा दरी दरी दा दरी 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 दा दरी दा बाबा दरी दरी बाबा दरी दा बाबा दरी दा अलबेला सजन आयो रे बाबा बाबा दरी दा बाबा दा बाबा का दरी का दरी बाबा 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 दरी दा दरी 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 दा बाबा दरी दा अलबेला सजन आयो रे मद बाबा का बाबा मद बाबा दरी 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 का दरी बाबा का बाबा मद बाबा दरी दा मद बाबा का अलबेला सजन आयो रे अलबेला Thank you so much. Thank you so much. That was a great performance. Yes. अचानक से don't talk to me. क्यों? Well, because our next performance is mine. Oh mine, the dance with only gesture, no voice. Yes, because sometimes you only need emotions to express yourself, not words. Ayush, do you know the theme of the mind? Well, it's every child is special. Yes. हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है. जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है. Now, children of class 8 will take us to the centuries back. Give them a huge round of applause and welcome them to the stage. अभी भी सेंटर नहीं है, अभी भी नहीं है. सेंटर में पीछे और पीछे और पीछे. बैक आते जाओ, बैक आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, मैं बता दूंगा. आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, हो जाओ, पीछे और बैक आओ. बस बस ठीक है. सेंटर
3, 2, 1. Warning, 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 warning. Missile log detected. कभी कभी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं, इमोशंस ही काफी होते हैं. Just a huge round of applause for our students of class 8. Be a dreamer because this world is full of realistic people. The vision now is the future tomorrow. Believe me, the situation you are in today will be changed tomorrow. I know it storms today, but the sun will shine tomorrow. When you sign up to be a dreamer, it's like sending an invitation to Murphy's Law. You have to sacrifice sleep, friends, study circles, and everything just to make that dream into a reality. I know it's hard, but it is supposed to be hard. If it were to be easy, then everybody would do it. Swapnam, Drashtam, Dhairyam, Karvama, which means we must dare to dream. With this being said, we take immense pleasure to invite the students of class 11 for dance and drama. So have a huge round of applause, please.
students. Good morning, ma'am. How are you all? What did you all do yesterday at home? Ma'am, I studied at home. Ma'am, went for a party. Ma'am, I went to the hospital. Okay. Yesterday I gave you some homework. How many of you have done it? There's no sound at all. What about others? Have you all not done it? Open up. Give me the reason for not doing your homework. I'll help you, children. Okay, children, let's have a discussion on your goals. Do tell me, what's the aim of your life, each one? I want to become a teacher. No, I want to become a lawyer. Ma'am, I want to join the army. I want to be a scientist. Students, today we have a special guest amongst us. It is James Sir, who will give you some motivational speech on how to achieve your goals. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। Dear Rajesh, congratulations. You have been selected for further studies in University of Cambridge for Aerospace Engineering.
ए मोनू। हाँ मम्मा। ये क्या है तुम्हारा? पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तुमको, बस सिर्फ खेलना कूदना है। अरे मम्मा, मैंने तो अपनी स्टडीज पूरी कर ली है। तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। हेलो हेलो, कैन आई स्पीक टू मोनू? जी, आप कौन? दिस इज फ्रॉम नेशनल फुटबॉल एकेडमी। मोनू, तुम्हारा फोन है। हाँ मम्मी। हेलो जी, क्या आप मोनू बोल रहे हो? यस मैम। दिस इज रश्मि शर्मा फ्रॉम इंडियन नेशनल फुटबॉल एकेडमी। तुम्हारा 16 तारीख से जमशेदपुर में जो ट्रायल होने वाला है उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। 14 तारीख को आके कैंप ज्वाइन करो। यस मैम, थैंक यू मैम। यस, आई डिड इट।
उनका कुछ है ही नहीं। बैठी तो ये हिल जाएगा। कैमरे दे दो कि दोनों कैमरे? दो कैमरा लगा आइए पड़ा पहले की। It was a fantastic performance. Now, what's next? Abhigyan, tell me which month it is? It's December, the month of Christmas. Yes, as December arrives, we all get the vibes of Christmas. The day that illuminates the world with warmth of love, care, and true sacrifice. It teaches us the value of forgiveness in affection, even for enemies. Yes, it is a day when we derive the pleasure with true joy and pure joy and serenity. Let us celebrate this festival, and to make this occasion more special, here comes the students of class 11th and 12th to show you a beautiful dance performance and to celebrate the Christmas enthusiastically. Let's celebrate the final performance of the day. രണ്ട് മനുഷ്യർ
is not only the grateful virtue, but the parent of all other virtue. Now I request Mrs. Richa Bijuria to propose the vote of thanks. Please, ma'am. Good evening, everyone. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. I, on behalf of entire team of MGM, first of all, extend my most sincere thanks to Almighty God for making this event a resounding success. We are blessed to have our Manager Bishop, Metropolitan of Calcutta Diocese, His Grace Alexius Mar Eusebius, for the 56th annual function. His benign presence is a blessing for the MGM fraternity. On behalf of MGM family, we express our sincere gratitude to His Grace. We take immense pleasure in thanking our Honorable Chief Guest, Dr. Abhishek Pallava, Superintendent of Police, Durg, and our special guest, Shri S.V. Nandanwar, Chief General Manager, and Madam Vibhaja, Chief Coordinator, CBSE, for their valuable presence and words of wisdom. Further, I would like to express my deep sense of gratitude for our Vice President, Reverend Father Jacob Thomas, and School and Church Managing Committee members for their valuable time and support. Our sincere thanks to our Principal Sir, Dr. B.D. Tharukan, Headmistress Ma'am, Mrs. Anita Rajan, and Madam Bina Matthew, and in charges, Mrs. Shiny S. Joseph and Mrs. S. Gina, who stimulated us to our best and stand a spirit of strength. Finally, I would like to thank all teaching and non-teaching staff for their hard work. Last but not the least, a big thanks to our building rock stars that made this event joyful with their impressive performance. Thank you one and all. Have a great day ahead. मैं फिर इनसे गुजारिश करूंगा बस 2 मिनट का वक्त और दें और नेशनल एंथम के बाद जाएं. I would like to take this opportunity to thank the organizing committee under the stewardship, able leadership of Madam Swapna Chako and the team of headmistresses and in charges. Such a big event has a gamut of activities which require meticulous planning so that we have smooth coordination throughout the functions. This was a complete cultural extravaganza where technology was seen to be utilized at its best. So let us thank one and all who were directly and indirectly involved to make this program a grand success. There was a big support team who was working outside the campus, near the gates, to make this program a grand success. They had been toiling hard to ensure the crowd is managed properly. On behalf of MGM fraternity, I apologize for any kind of inconveniences which has happened and which has been beyond our control. With that, once again, I wish you the very best and let us have a great year ahead and learn more and more things through these events also. Thank you very much. I request you all to stand up in respect of our national anthem.
Bye.